नमस्कार मित्रों, टीवी न्यूज की दुनिया में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नाना प्रकार के जिहाद मजार जिहाद, ये देखो एक और नया आ गया। ये सब तो चलता ही रहेगा। इस हफ्ते हम कुछ अलग करेंगे। नो आज तक, हाँ। नो अर्नब, बकवास की भी हद होती है। आई एग्री। सो नो मोर ऑफ यू, नो मोर ऑफ अमीश आइदर। I will never call you. हैं? क्या हो गया अमीश जी, इतना गुस्सा? उदित राज कह रहे हो? तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो। आपको तहजीब नहीं है? कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? अरे भाई क्या बात है? मैं हटता हूँ। नहीं हट जाओ, फिर हट जाओ। अभी कहते हैं तुरंत हटो। आप लायक नहीं हो बुलाने के। कार्यक्रम के अंदर आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। जाओ यहाँ से। I will never call you. Don't like this video. I'm telling you, don't like it. इस वीडियो को बिल्कुल लाइक मत करना, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को लाइक करोगे उतने ज्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे और फिर उतने ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा कि गुल्लू जी के साथ फिर से क्या हो गया। नॉट अगेन यार, हद है। वी डोंट सपोर्ट एनी जर्नलिस्ट और एंटरटेनर बीइंग अब्यूज्ड लाइक दिस। #be nice to Gullu and do not like this video. Don't like it. And no more of Gullu, at least for this episode. Instead, this week we'll talk about संसद टीवी एंड द लास्ट बजट सेशन। संसद टीवी एक गवर्नमेंट टीवी चैनल है जहां आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई देख सकते हैं और सुन सकते हैं। गवर्नमेंट न्यूज चैनल सुनते ही आपके दिमाग में टीडी टाइप छवि बन गई होगी। ब्लैक एंड व्हाइट, शांत, सुशील, धीमी आवाज में बात करते हुए सभ्य लोग। यू वुडंट बी ब्लेम फॉर थिंकिंग बड़ा बोरिंग चैनल होगा यार, बट you're absolutely wrong. इस चैनल में एक्शन है। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसमें ड्रामा है और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। अमीश देवगन टाइप डायलॉग्स भी हैं। You won't miss him this episode. संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। नारेबाजी है। You heard that right. पार्लियामेंट में स्पीकर महोदय का स्वागत अब जय श्री राम के नारों से होता है। टोटली नॉर्मल, टोटली अमृतकाल। नाउ ऑफ द लास्ट 5 years दिस बजट सेशन वाज द लीस्ट प्रोडक्टिव। यानी इस बजट सेशन में बहुत कम काम हुआ, मस्ती ज्यादा हुई, इफ यू कैन कॉल दिस मस्ती। माफी मांगो चेयरमैन सर, माफी मांगो। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 16वें बजट सेशन पार्ट 1 was from January 31st to February 13th. बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक आया for 1 month and then you had budget session part 2 from March 13th to April 6th. The productivity of Rajya Sabha dropped from 56.3% in the first half of the budget session to 6.4% in the second half. In Lok Sabha, the productivity fell from 83.80% to 5.29% in the second half of the budget session. So मोटा first half में budget हुआ, finance minister spoke, madam president gave her first speech to the parliament, राहुल ने पीएम पे धावा बोला, पीएम ने राहुल पे वापस धावा बोला। So much हुआ है। So much तो नहीं हुआ, we can't really say that, but कुछ तो हुआ। In second session though, it seems बहुत कम कुछ हुआ। In fact, the number of sessions that were adjourned within seconds and minutes was just mind-boggling. बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। स्थिति की महत्ता को देखते हुए Let us allow the question hour. प्लीज अपनी जगह जाओ, सदन को। This is not appropriate. सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हाउस इज इन डिसऑर्डर, हाउस स्टैंड्स adjourned till 3:30 PM today. The house stands adjourned till 2 PM today. The house stands adjourned to meet again at 2 PM.
adjourned in 25 seconds. What even happened in those 25 seconds? माननीय सभापति जी, Question number 381. This is not appropriate. The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. please. You think your job is hard? Try this guy out. But how did it come to this? Now, the second part of the budget session started on March 13th. It was all going pretty normal. Look at all these visuals from Rajya Sabha. Everything looks business as usual. And then Piyush Goyal ji, the leader of the house, got up to speak. To summarize, he basically said, Rahul Gandhi, maafi mango for your speech in the UK, and all hell broke loose. Note, Piyush Goyal didn't actually name Rahul Gandhi, but everyone got the suggestion. एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। Speaker of the House had to calm everything down. कि हाउस में यदि अगर नेता कुछ कहते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता को भी कहने का उतना ही अधिकार है और औरों को भी है। It didn't take long though for them to start all over again. जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर कांग्रेस ने सोचा वो चिल्ला रहे हैं तो हम भी कम नहीं हैं। तुम लोग भी खड़े जाओ बस। The first day the house ended up getting adjourned after 11 minutes. The session then resumed at 2 p.m. the same day and both sides were ready for what else but Thawa! चलो हो जाओ शुरू। इन राज्यसभा धनखड़ साहब समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है भाई। What is your problem? What is the problem? What is the problem? What is the problem? What is the problem? राहुल गांधी माफी मांगो के जवाब में ऑपोजिशन के पास भी एक नारा था। लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही नजारा चल रहा था। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। So nice, so pleasant. थोड़ा क्लियरली बोलना। वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से वर्ष 22-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण। That is the Union Minister of State for Finance speaking. Pankaj Chaudhary ji is presenting the budget for the Jammu and Kashmir Union Territory with BJP MP Ramesh Biduri screaming in his ear. कितने खुश लग रहे हैं. Just look at how happy he is shouting that slogan. भाई अपने लोगों को तो बोलने दो. मतलब पंकज चौधरी is on your side. Let Pankaj speak. इस सब के बीच में बेचारी नविका अभी तक पार्लियामेंट तो पहुंची नहीं बिदुरी जी के साथ नारे लगाने के लिए, तो उन्होंने सारी कसर प्राइम टाइम में पूरी कर दी। राहुल ने भारत जोड़ो से जो कमाया लंदन में गवाया। नीतियों के विरोध और देश के विरोध में कुछ फर्क रह गया है या नहीं? क्या इस पर देश को कंफ्यूज किया जा रहा है? और क्या 2024 का एजेंडा सेट करने के लिए देश के लोकतंत्र को निशाना बनाया जा रहा है? सवाल पब्लिक का तो चलता ही रहेगा। Fast forward to March 17th. Sunset TV went totally mute when the opposition was screaming, "राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो।" राहुल पप्पू चलेगा, लेकिन राहुल जी को बोलने दो। Disruptions were pretty much the flavor of the entire session. The most work done in the entire session, though,
was by the camera guys in charge of recording the sessions. देखो भाई, आवाज म्यूट कर दी तो क्या हुआ? पोस्टर्स तो थे ही ऑपोजिशन के पास दिखाने के लिए, बट जैसे ही ऑपोजिशन वालों का पोस्टर दिखे वैसे ही झट से कैमरा एंगल चेंज। बजट सेशन के सेकेंड हाफ में पूरे टाइम कैमरा और ऑपोजिशन मेंबर्स के पोस्टर्स के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। ऑपोजिशन लीडर्स ने तय कर लिया था कि भाई हम पोस्टर खोल के दिखाएंगे, बट सरकारी चैनल ने भी ठान ली थी कि भाई पोस्टर नहीं दिखने देंगे। एंड दिस इवॉल्व्ड इनटू अ प्रीटी सोफिस्टिकेटेड गेम थ्रू आउट द सेशन। हु वन? यू डिसाइड। पोस्टर आया, एंगल चेंज करो। पोस्टर अगेन, जल्दी चेंज। Damn you, poster! Change. In case you want to know what was written on the posters, here's what it read. ब्रिक्स का आई इंडिया लुढ़क रहा है। 3 दशक की राजनीतिक अस्थिरता को एक बटन दबाकर खत्म कर दिया। ऑपोजिशन के पोस्टर्स एंड बीजेपी की नारेबाजी बुलंद रही। राहुल गांधी माफी मांगो। There it is again. The cameraman or men or women really wanted to show the speaker, but they just had to keep cutting away because the damn posters. वो देखो, स्पीकर के बिल्कुल पास ये नेताजी येलो कपड़ों में इतनी शिद्दत से खड़े हैं पोस्टर लेके, कैमरा के सामने चांस पे डांस करने को तैयार। As the days progressed, the battle between the posters and the camera angle intensified. Opposition वालों ने सारे angles अब समझ लिए थे, कहाँ से पोस्टर दिखा सकते हैं। They had it all planned. स्पीकर साहब को चारों तरफ से घेर लिया है पोस्टर वालों ने। स्पीकर महोदय, उप्स, पोस्टर चलो लेफ्ट साइड से ले आओ। उप्स, अरे यहाँ भी आ गए। पोस्टर्स आर विनिंग, पूरा फेस कवर हो गया। लिखा क्या है इसमें? We fought the British, we will fight the RSS. चलो let's just show someone else talking. That the Rajya Sabha has elected 10 members. अरे इधर भी, just cut it. This battle took on epic proportions when Parliament was passing the finance bill. Now this was one of the only 2 bills that were passed in the entire session. Just try and make sense of it if you can. Between sloganeering, posters, changing camera angles, bill भी जैसे तैसे पास हो ही गया. Of course without any debate. Just watch. मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन 2, 3 और 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री संशोधन संख्या 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रत्येक खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। After the suspension of Rahul Gandhi, the opposition now was pretty serious and in no mood for relenting. They wore black and this time they bought placards on a stick. Unfortunately for them, इतनी मेहनत के बाद the house was adjourned in less than a minute. The house then resumed at 1 o'clock again with more posters versus camera. Number 1, correcting the reply to start question number 57 given on 9th December 2022 regarding establishment of National Institute of Medicinal Plant, and 2, giving reason. By the last day of the session, the protesters had figured out all the angles and they had come very organized. I mean, just check this scene out. Distributing placards कि भाई जाओ अपनी जगह ले लो, ये लो सारे posters. I thought it wasn't allowed to show posters in Parliament. सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है। पोस्टर वालों, थोड़ी तो मर्यादा रखो। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना। Now the last day, the most beautiful part of the session. This is my favorite part. ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। Wait for it. सदन की कार्रवाई को वैधान करते हैं, बाधित करते हैं। It's going to come. Just wait for it. अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।
that's all it took to get them together and be silent and in harmony, singing the national song. I think that's all they should have done the whole session. सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है. This has been the 6th shortest, not so sweet budget since 1952. 35 bills pending. Only 3 bills introduced. Only 2 bills passed. Question hour? वो क्या चीज़ है? Question hour functioned for only 19% of the scheduled time in Lok Sabha and only 9% in Rajya Sabha. No private members' bills were introduced or discussed. The 17th Lok Sabha has still not elected a deputy speaker. All proposed expenditure for budget session was passed without debate, without any discussion. By the way, when Biduri ji was screaming "Pappu, Pappu" in Chaudhry's ears, he was tabling the demand for supplementary grants. Basically, the minister was saying the government needs 1.43 lakh crore rupees worth of extra funds to spend this year. This was introduced with this "Pappu, Pappu" in the ear and passed without any discussion. According to this article, it takes around 2.5 lakh rupees per minute to run parliament. This includes the upkeep of the building, maintenance, expenditure, parliament security, salaries of course, and allowance of MPs, their bodyguards, parliament staff, and all employees directly or indirectly involved. Taking this figure of rupees 2.5 lakh per minute and the number of hours wasted in Rajya Sabha and Lok Sabha, I think we wasted about of taxpayers' money. And it's not as if our MPs were very happy about this. At least privately they weren't very happy about it. Wah wah. Private mein kuch aur, parliament mein kuch aur. The functioning of parliament is paramount to any democracy. This is where the people we elect raise our issues. Politics, one-upmanship, tu me is for election time. Once the elections are over, the people who won, the people who've become our elected representatives are supposed to come together and work together. The governing party today is in a 24/7 election mode. Outside of parliament, you have the CBI, IT, ED flexing on opposition. Case after case piled on opposition leaders that sometimes disappear when they switch over to the BJP or when elections are over. More and more state governments feel that the post of governor has become political. Governors are refusing to sign bills in opposition rule states, undermining federalism. Television media की बात हम क्या ही करें? TV is the most preferred medium of people in India of watching news. And what's happening on television media? What is their stance on all of this? You can judge by the tone and tenor of debates they had during the entire parliament session. Check out some of our star anchors. Between 30th January and 6th April, Sudhir did a total of 46 debates, out of which 25 were anti-opposition, 14 were pro-Modi or BJP, and 7 were others. Navika did a total of 35 debates, out of which 21 were attacking the opposition, 7 were pro-Modi or BJP, and 7 others. Ardia Gullu did 42 debates, out of which 23 were anti-opposition, 14 debates were pro-Modi and BJP, and 5 were on other topics. Arnab did 92 debates, 48 were anti-opposition, 24 pro-Modi or BJP, and 20 others. So you have an opposition that's perpetually cornered in the media and, of course, through agencies. You've had the most vocal critic of Modi suspended from parliament. The opposition on its part has also levelled some very personal, unbecoming attacks on the PM. Obstructions aren't new. In fact, when the BJP was in opposition, here's what some of their tallest leaders had to say when they were protesting against the UPA in parliament. Parliament's job is to conduct discussions. But many a time, parliament is used to ignore issues, and in such situations, obstruction of parliament is in the favour of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic. Not allowing parliament to function is also a form of democracy, like any other form. So if obstructions aren't new, what is new? What is new is the total lack of ability for the government and opposition to talk to each other, listen to each other, and of course, argue with each other in the good old tradition of parliament. And all of this, slowly and steadily,
we as a people are losing sight of why debate and discussions in parliament are essential to democracy. Slowly and steadily, citizens are desensitized to what's happening in parliament and what their elected MPs are doing in parliament. You can have a shiny new parliament building and you can have breathless coverage of the PM inaugurating it. But what's the point of it if that just remains a showpiece? Thank you so much guys for watching this episode. This was our special episode on everything that went down in Parliament over the last 3 months. We hope you liked it and found it useful. If you're more interested in affairs of Parliament and our Constitution, we have 2 series for you. One is called Constitution, check it out. The other is called Sansad Watch. Do check both these series out. I think you'll find them very valuable and educative. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way.